हाय दोस्तों, हेलो हेलो एवरीवन। मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई सीए नकुल कठेरिया। और आज हमारे साथ हैं, मैं मैम बोलूंगा उनको, मैम। क्यों? क्योंकि अब वो बन गई हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और हमारे साथ हैं श्रुति जी। श्रुति जी, कैसे हैं आप? और थोड़ा सा अपने बारे में सबसे पहले ये बताओ, कैसा लग रहा है सीए बन के? So, so sir, first of all, thank you for having me. So I think it's a great feeling, and the feeling is not sunk in yet. I'm still, getting phone calls, messages, invited to felicitations, etc. So I think the thing going keeps going, and it's a wonderful feeling. My parents are super excited, super happy. All my friends are very happy. So yeah, it will continue to stay for a while. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रुति, जस्ट गिव अस अ ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ कि भाई आपका ये जर्नी जो सीए वाला है, फाउंडेशन की तो हम बात ही नहीं करते। ठीक है, फाउंडेशन तो ठीक है, फाउंडेशन बनाए काम आता है। अब आप मेरे को ये बताओ, इंटरमीडिएट, आर्टिकलशिप, सीए फाइनल, कैसे आपने, आई यू डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट या थ्रू फाउंडेशन, कैसे आपने चालू करा? थोड़ा सा इस बारे में बताएं। So मैंने CPT से start किया था. So I started with when there was a CPT and not foundation was not introduced then. एग्री। So फिर उसके बाद so I moved on to a regular college. So I did my college from Hansraj. That's Delhi Oh, that's University. nice. I'm a postgraduate from Yeah. D school. Oh, that's great. Okay. So so after that I gave my intermediate along with that. So after that it was articleship and the CA final then. Articleship and CA final. Perfect, perfect. Even I prefer that route only. I did my CPT. I also completed my CPT only. CPT. Then after CPT, I joined the college. When I was in my second year of college, I started preparing for IPCC. I think you did inter or IPCC. Okay. What about you? You did No, it was inter or intermediate, IPCC? new course, new न्यू course, कोर्स, new न्यू course, कोर्स। new आई वाज course, एन ओल्ड कोर्स। intermediate. आई डिड Yeah. माय इंटर। और इंटर के बाद देन ठीक है, जैसे ही इंटर खत्म हुआ, कॉलेज भी खत्म हो जाता है उसी टाइम पे। मेरा प्लान बिल्कुल सिंपल था, इंटर खत्म, कॉलेज खत्म, देन आई Okay. मूव फॉर आर्टिकलशिप। आई थिंक तुम्हारा भी यही प्लान होगा श्रुति, आपका भी एग्जैक्टली यही प्लान। नहीं सर, मेरा एक्चुअली फर्स्ट 1.5 ईयर में हो गया था इंटरमीडिएट परफेक्ट। एंड CPT वाज बिफोर कॉलेज. हाँ, सीपीटी वाज बिफोर कॉलेज। और उसके बाद हमने सो आपने ऐसा फर्स्ट करा होगा कि फिर 1.5. कॉलेज के ऊपर अपना फोकस करके देन यू मूव टू आर्टिकलशिप। Yeah, so it was first 1.5 year, it was CA intermediate. So I gave my both groups in a time span of 15 months. ओके। फिर उसके बाद next 1.5 year was purely college, and after that I took on articleship. कूल। परफेक्ट, परफेक्ट। इंटरमीडिएट से बात स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट में हार्डेस्ट सब्जेक्ट, सबसे मुश्किल? I think it was EISSM. मेरे टाइम पर दिस सब्जेक्ट वाज आईटीएसएम। एंड बिलीव मी, Okay. ऐसा सब्जेक्ट है भाई साहब, हालत खराब हो जाती है, ये नहीं समझ में आता लिखे तो लिखे क्या। करेक्ट। सर ये तो कॉमन है, मतलब सभी IPCC स्टूडेंट्स के लिए, आई थिंक सभी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, आई थिंक ITSM एंड दिस EISSM वाज स्कैरी, तो ये तो कॉमन चीज है. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप सच कह रहे हो कि प्रैक्टिकल्स आर वेरी गुड, लाइक वी कैन मैनेज वेरी इजीली। हम सीए वाले बच्चे हैं यार, प्रैक्टिकल तो मैनेज कर ही लेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, अच्छा अब बात आई ऑडिट लॉ, चलो वो भी हो जाता था। ये EIS SM ITSM, इससे ना कनेक्ट नहीं बनाना होता बड़ा था. मुश्किल होता है यार। कौन से फ्लो चार्ट, कैसे एग्जैक्टली. सिस्टम, कौन सा ERP। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात आती है, क्योंकि अब तो अपन दोनों लोग सीए हैं, पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात आती है ना, तो इसके अंदर डिप्लोमा होता है डीसा का, डिप्लोमा ओके. इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। वहां पे ITSM ही पढ़ना पड़ता है दोबारा। तो अगर आपको बैंक ऑडिट करना है तो फिर डीसा में जाना पड़ेगा दोबारा से। कूल कूल नो कूल। नो नो. इंटरमीडिएट के अंदर भाई श्रुति ने कहा ITSM से सबसे ज्यादा डर लगता था, तो ITSM को फिर आपने पकड़ा कैसे, EISSM को? सो आई थिंक फॉर EISSM द थिंग इज कि आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा. मतलब एवरी डे यू हैव टू कीप इट इन कांस्टेंट रिविजंस.
because so what I did was I did around 4 to 5 revisions for EISSM as far as I remember. And then the point is that you have to just keep seeing that page, or that chapter again and again, so that it, somewhat gets retained in your memory. So I think this is Completely. the thing which really helped me for EIS system, because you cannot really, understand all the technical language. So you have to mug up some portion. And for mugging up, you need to see it every day on a daily basis. Exactly. And I think in chartered accountancy, it is not about the completion of course, it is about the revision. You need to do multiple revisions, Yeah. whether it is at intermediate level or final level, but you have to do at least 4 to 5 time revision. Yeah, At exactly. We least have to do that. to be Mm-hmm. confident in exam. कि भाई जो Yeah. करूंगा सही करूंगा। एक दो रिवीजन पे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं सही करके भी आ पाऊंगा कि नहीं। मेरे को तो ऐसा लगता था कि कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जब तक 3 4 रिवीजन ना। Yeah, point is कि हाँ, मतलब अगर हो तो जाता है फर्स्ट डिवीजन में भी, बट पॉइंट इज कि उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए एग्जाम में वी नीड टू बी थरो विद इट अराउंड 2 to 3 टाइम्स. सो आई थिंक Perfect. रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. Okay. So now it comes to articleship. Articleship कहाँ से करी आपने? So my articleship has been from KPMG, Gurgaon. So my first 1.5 year has been in statutory audit domain. Cool. And then I took in internal transfer, and I'm working in the corporate and international taxation profile. Okay. It means in the span of Yeah, 3 years, you took audit as well, and then yeah, corporate and international tax. taxation. Perfect. Perfect. Yeah. What are the challenges in statutory audit? What Okay, challenges have you so faced? okay, so talking about that, I think everyone is aware about the Big Four culture, so you don't have those, limited hours, or you don't get a set schedule for studies. So yeah, that was somewhat an issue to, manage studies along with that. And apart from that, I think the deadlines are very stringent. So, you cannot just procrastinate anything. You have to be, just stick to the schedule, or maybe, if the client wants a deliverable, so you have to just get it ready at the nick of time and deliver it to him. So Exactly. that is one point. But yeah, but I think it involves a great learning experience, because, you just understand what the client exactly wants. You are constantly in a client facing role. So that helps you develop on your communication skills as well. So overall, I think it was a great experience. I could work on multitude of national and international clients as well, and could took on great, great areas uh, to work upon. So I think it was overall a very wholesome experience to work in statutory audit. And it was not just, proper statutory audit. I worked on tax audits, group audits, So and I've when also it worked comes to on, statutory, you need to check yeah, each and every aspect basically of yeah, business. yeah. So you Ah, are thorough with same the thing. every element of the financial statement. Like you are Exactly. deep diving into everything, like be it inventory, or be it revenue, or be it other expenses. So you're just looking at everything. So you also, if you just learn to read financials, so whenever you are going, for anything, maybe you're applying to any company, or maybe, you're just studying randomly any company. So if you are able to analyze the financials, I think that is the best thing ever. You can just And understand the whole exactly. picture of If that you have company. done statutory audit, you are having a very great knowledge of the financials. Yeah, किताबें बोलती exactly. हैं। हाँ, that is the thing. किताबें कि आप, बोलती हैं। हाँ, कंपनी, हम तो अपनी भाषा में ये exactly. बोलते हैं, किताबें बोलती हैं आपकी, आपकी किताबों में जो है वो हम पढ़ लेंगे। दैट इज रियली गुड। Yeah. बट इन बिग फोर, even I was taking a joint session with another faculty. In big four there are some challenges as well. Like it is very Yeah. difficult to manage the studies. It is very difficult. Actually, hats off to you that you came from big four and then you cleared your CA intermediate and final in both groups. मैं तो both groups से बहुत डरता था। तो how did you manage? So I think it is not that tough also. मतलब थोड़ा हाइप ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है. मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है. मतलब it depends on you कि how you manage it. If for example maybe you have to start early to office, so maybe you can, wake up till late in the night. And if maybe you can join later in the morning, so maybe you can study in the morning.
So you should keep a target that when your classes are going on, you should try that at least one lecture every day you are taking, and that too you're starting from day one. So the day one of your articleship and the day one of your classes should coincide. You Planning shouldn't is wait for like important. 6 months or so. Yeah. So I just made sure that when I'm starting with my articleship from the day one, I'm consistent with my classes. So even if it's my birthday, even if it's 31st December, and even if it's a family event, so I just make sure that I'm taking my classes. I'm taking self-study. And so it was the schedule for me like this was that in the morning I used to take a lecture. Okay. Then I would go to office, or if it was a work from home, then maybe I'm working from home, or I'm going to office or a client side. And then after returning from there, maybe a rest of 1 hour or two, or then I'll self-study that, whatever is taught in that lecture. Okay. So I just try to keep it, that I'm up to the point, that I'm not missing anything. You're not missing. And by taking Basically, the lecture, consistency. yeah, You need to maintain yeah, consistency. consistency is very important. Consistency, you Yeah. need to maintain. That is the most important thing while managing your articleship along with your CA final studies. Yeah. Consistency is the And I most think important. And I think one thing I would like to add is that what students generally do is that they rush with their classes. So I think that is not the right thing. It's very important कि अगर आप कोई क्लास देख रहे हो तो आपको वो समझ आनी चाहिए. For example, अगर आपने आज एक lecture देखा and maybe you're not able to grasp it properly. Maybe you feel that you're not able to understand it from that particular teacher, or maybe the notes are not enough, or maybe not comprehensive enough. So उसी time just pause that lecture and just watch a YouTube video maybe, or just move to Telegram and find some notes of some other faculty, and just do it then and there. If you will leave it that ठीक है बाद में कर लेंगे, जब study leave होगी तब देख लेंगे, तो वो रह ही जाएगा. So I made sure कि even if मेरी classes extend भी हो रही हैं, तो भी जिस class का lecture मैंने ले लिया है मुझे समझ आ गया है, मतलब मेरे पास उसके proper notes हैं, and I'm clear on the understanding part. So I think that is very important. This This is is the what I problem feel. with the students. This is the problem with the students. यहाँ पर बहुत सारे बच्चे they just do their classes for the sake of completion. कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, जो पढ़ लेंगे 70% समझ में आ रहा है, ठीक है. वो उनका पॉइंट क्या रहता है ना, ओके विल मैनेज एट द टाइम ऑफ रिवीजन. उन्हें ये नहीं पता जब पहली बार Yeah, में समझ में नहीं आया तो बाद में कैसे समझ में आएगा भाई. सो exactly. मैं हमेशा ये कहता हूं कि देर हो जाए चलेगा, बट कंप्लीट होना चाहिए. एटलीस्ट यू शुड नो कि व्हाट यू हैव स्टार्टेड. भाई यू हैव डिवोटेड अराउंड 2 hours 3 hours पर्टिकुलरली. अगर उस 3 घंटे में यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट, देन बेसिकली दोस 3 hours आर वेस्टेड. सिंपल. भाई अगर आपको 70% मिल रहा है, यू शुड नॉट सेटिस्फाइड विद 70%. अगर मेरे को नहीं आया तो रोको वहां पर, बिल्कुल सही है, मैं भी ऐसे ही करता था. एंड इवन व्हेन आई वाज इन माय सीए फाइनल आई यूज्ड टू प्रिपेयर हैंड रिटन नोट्स. पता नहीं लोगों को, आजकल मेरे को लगता है लोगों की ना लिखने की आदत ही छूट गई है. मेरे पास अपने हाथ से लिखे हुए सारे नोट्स होते थे, मैं खुद बनाता था अपने हाथ से. और बच्चे क्या करते हैं आजकल, फिर आपसे आपसे ओपिनियन लूंगा इसके बारे में. बच्चे क्या करते हैं, इस फैकल्टी के नोट्स हैं दियो, इसके नोट्स हैं दियो. पढ़ना उसने किसी से नहीं है भाई, खुद के बनाना यार. खुद के बना, ज्यादा बेटर रहेंगे. श्रुति, योर व्यूज. So I think, sir, I completely agree on this with you. So even I prepared my own self notes for a lot of things, like for example, theory subjects, और practical में भी अगर मुझे कोई topic ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है पहली बारी में, so I would make sure कि मैं उसकी एक summary लिख रही हूँ. मतलब for example, I'm doing a question and I feel that I'm not able to understand this in first go. सो आई मेक श्योर कि उस क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं हिंदी में या मे बी लोकल लैंग्वेज में जैसे भी मुझे सही लगता है मैं उसे नोट डाउन करके लिख रही हूँ, सो दैट व्हेन आई एम डूइंग दैट क्वेश्चन अगेन मे बी आई एम स्टक, सो आई डोंट हैव टू अगेन रेफर दैट वीडियो और मे बी दैट लेक्चर. आई कैन जस्ट स्ट्रेट अवे रीड माई अंडरस्टैंडिंग एंड जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. एग्जैक्टली. कई बार बच्चा ये कहता है कि या अरे यार अपने नोट्स दिखाइए, जो शो मी योर नोट्स. भाई वो मेरे नोट्स हैं, माइट बी मैं तो अपनी नोट्स के अंदर हिंदी बहुत यूज करता था, क्योंकि मेरे नोट्स हैं, मेरे को कैसे में कंफर्टेबल है वो मेरे को जानना है ना. चाहे मैं हिंदी में लिखूं, इंग्लिश में लिखूं, पंजाबी में लिखूं, मेरे को समझ में आ रहा है कि मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, तो दैट इज परफेक्ट आई गेस. या इससे अच्छी तो कोई एग्जैक्टली. बात ही नहीं या है. तो व्हेन इट कम्स टू सीए फाइनल, हार्डेस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू, ये मत कहना कोई नहीं.
So I think that is also a common thing for everyone. That is audit. Audit is a nightmare. It looks like audit है हमने करा हुआ है, easy है, but when it comes to answer writing, the most important, the Yeah. most difficult task is what you will be writing in your exam. Audit करा है, yes, we know each and everything, but the thing is how to write. सबसे बड़ा पंगा ये पड़ता है ऑडिट में. Yeah. Written practice बहुत 40-50 लाने important in मुश्किल हो theory जाते हैं subjects. भाई. मेरे तो ये हाल था, 40-50 लाने मुश्किल आता है ऑडिट एंड इसका, मतलब at my time there was इसका. Okay. हाँ, तो अच्छा, Okay. what about FR? Easy. Okay. So for FR, I would say FR was my favorite subject. 9-2. So I got yeah. So I extension. think मैं okay. So I think FR में it's very important कि आप अंडरस्टैंडिंग पे बहुत फोकस कर रहे हो. Like आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आने चाहिए. और for FR I think I got a plus point in my articleship as well. So I think I was working for a client और उसमें हम consolidation कुछ कर रहे थे. मतलब we were Okay. just trying to assemble numbers, and at the same time I was watching lectures of consolidation from that Yeah. faculty. So I think that was very helpful. I was able to link it very practically. So I think FR was my favorite subject. Whenever I would feel low or I would feel that I'm not good for anything and I'm not able to do, so FR was one subject I would always pick. So Yeah. इसमें यही है कि अंडरस्टैंडिंग पे बहुत फोकस होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको इसमें ना मतलब सब्जेक्ट इज वेरी वास्ट, इट्स ह्यूमंगस, so you need to consolidate it. So I think for that it is very important that you are making your short notes, some crisp notes for yourself for every index or everything, so that at the last moment you can just turn pages of that notes and just quickly do the selected questions. Because how much you do FR, but still on the last day you will feel that it's very vast and you won't be able to complete it. So it's very important that from day one you are working on this notes thing. So I Shruti, made I sure कि always जब say ये classes भी exactly. चल रही I'm थी. completely agree with you. I always say that instead of reading a 500-page book at the very last time, just before your exam, it is next to impossible. But it is very possible to read your own notes, which you have prepared by yourself, and the whole Yes. subject is covered in just 50 to 60 pages. The short notes. It is very, and this is, I think this is the most effective way to study. This is the most effective way to study. Perfect. Okay. Yeah. Challenges in CA final. What Okay. challenges So did you first face? of all, so I would just I think 2 to 3 challenges I faced. So the first and the foremost challenge is retention. It's very difficult to retain because the syllabus is huge and every subject requires a lot of time and energy. So for retention purpose, first of all, you need to work on the number of revisions. Then secondly, you need to focus on making your notes. You need to just understand that you have to shorten the subject. Just bring all the big things into just small thing. So it's very important that you are just assembling everything beforehand, because in the last 1.5 last 5 months you cannot do that. You can only read whatever is available for you, so you have to do this beforehand. The conclusion Generally is I have this seen only. students की Exactly. articleship phase में वो लोग कुछ Completely agree. I'm completely agreeing with you. सारी चीजों का निचोड़ना केवल एक ही है. The conclusion is you need to maintain consistency, you need to prepare your handwritten notes, and you need to do multiple revisions. These three keys, like these three things, if you follow these three things, definitely you will be passing your CA final along with your articleship. What are your views on that? सो सर आई थिंक चिल्ड्रन क्या मतलब बच्चे क्या गलती करते हैं कि आर्टिकलशिप फेज को सीरियसली नहीं लेते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आर्टिकलशिप फेज में भी मतलब अपनी सीरियसनेस को मेंटेन रखो, ना कि वो स्टडी लीव के पीरियड के लिए वेट करो. सो व्हाट आई डिड वाज कि जैसे मैं एक सब्जेक्ट की क्लासेस कर रही हूँ एंड जो उससे पहले मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट किया है मैं उसको साइड बाय साइड रिवाइज कर रही हूँ. सो दिस विल हेल्प मी कि मैं 2 सब्जेक्ट्स एक साथ कैरी कर रही हूँ, and also at the same time ki once I'm revising doing it with the class and next time doing it with revising it with another subject, so that helps you to retain things. तो ऐसे करके मैंने अपनी फर्स्ट रिवीजन स्टडी लीव से पहले ही कंप्लीट कर ली थी सभी सब्जेक्ट्स की. Oh, nice. So बहुत बढ़िया. yeah.
बहुत तो मैंने अपनी बहुत क्लासेस कभी रश नहीं की थी कि आई फर्स्ट कंप्लीट माय क्लासेस देन डू द स्टडी प्रिपरेशन, सो इट वाज अलोंग विद द क्लासेस ऑलवेज. हाँ, तो दिस इज वेरी सिंपल, लाइक इफ यू वेट फॉर कंप्लीशन ऑफ द क्लासेस एंड देन यू विल रिवाइज, you cannot even revise the full CA final in 2 years. या 100% श्योर कर ही नहीं सकते आप भाई, मतलब ही नहीं बनता जो आप कर लो. इट्स नॉट, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. यू शुड डू साइमल्टेनियसली रिविजन. लाइक एक एक चीज या चल रही है, दूसरे की रिवीजन करते रहो, इवन while doing a particular subject. ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर कर रहा हूँ, उसके रिवाइज कर रहा हूँ, उससे अगला चैप्टर कर रहा हूँ, पीछे वाला रिवाइज कर रहा हूँ. अगर आप ये सोच के चलोगे कि पहले हाँ लेट मी फिनिश माय कोर्स देन विल डू रिवीजन, पॉसिबल ही नहीं है बॉस, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं बनता. या सो श्रुति, आई गेस तो आपके पास में वो भी आ गया होगा अभी तक तो, एक जो फर्स्ट 50 रैंकर्स होते हैं उनके लिए मैनेजमेंट प्रोग्राम भी होता है आईसीआई का. सर अभी तक तो नहीं आया है. मैं बता लेट्स रहा हूँ सी आएगा, कब आता है. पक्का आएगा. उसके अंदर जो लेट्स सी. टॉप 50 रैंक्स होती है उनको ऑफ कैंपस, जैसे आपके भी बिग फोर्स में होते हैं ऑफ साइट, होता है हम्म. ना. तो आपको ऑफ साइट पे ले जाया जाएगा और आपको कुछ मैनेजमेंट लेसन्स दिए जाएंगे. दैट दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड. ऑल्दो मैं पार्ट नहीं बन पाया, मेरी वाइफ पार्ट बनी थी उसका, मैं नहीं बन पाया ओके था. हाँ, बट दैट इज रियली गुड. और श्रुति, व्हाट आर द प्लान्स, नेक्स्ट प्लान, रोड अहेड? सर अभी तो मतलब फॉर द टाइम बीइंग आई एम थिंकिंग टू pitch the placements You should. for like 2 to 3 years. I'm trying for a proper job where I can get a good exposure, and after that I'm planning for an executive MBA. Okay, nice. Yeah, so these are the plans for next 5 years, I would say. So you'll be sitting in a campus placement, right? Yeah, You I'm planning to. you'll get a job, very good job. You will get definitely. So Thank you'll you. be you'll be joining the industry, or you'll be doing Yes, I'm job little in post. inclined to. No, I'm inclined for the industry for the time being. Okay, nice, 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 nice. Good. Okay, Shruti, two three questions. थोड़ा सा और, Mm-hmm. अब मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आपसे बात करने में. एक दो चीजें मैं आपसे और पूछूंगा कि Sure, sure. हाँ, there's a time in everyone's life when he or she feels very low. नहीं हो पाएगा यार, बहुत मुश्किल हो रही है. ऐसा मेरे साथ बहुत होता था, बहुत मुश्किल हो रही है. कभी कभी ऐसा लगता है, समटाइम्स यू फील ओ यू नो एवरीथिंग, एंड अदर डे यू विल फील नहीं हो पा रहा, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं बन पा रहा, दिन ही खराब है आज का. आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? बहुत बार हुआ सर होगा मेरे होता ही हिसाब रहता से है, तो. ये तो बहुत नॉर्मल है. हाँ, बहुत नॉर्मल है. मतलब एवरी ऐसे में अदर डे हाउ यू टू फील मैनेज, कि हो ही नहीं रहा है. सॉरी सर. हाउ डिड यू मैनेज इन दैट सिचुएशन? Okay, so I think this is a very normal feeling. So first of all, you need to try and pacify yourself that it's okay to feel like this, and it's normal to have this kind of feeling and feel that you can't do anything and it's impossible. But for this, I think first of all you need to have that intrinsic motivation within yourself. That okay, even if I'm not able to do it today, maybe I'll try for it tomorrow. So I think this happened with me in SFM that I used to try questions and I wasn't able to solve them even after revising concepts multiple times, etc. So what I did was I would refer YouTube videos, I would make my own self notes, then I would read them again and again. I think for SFM I was very scared, so I did last 6 to 7 attempts questions, past year questions, along with my coaching material. Still, I wasn't getting confidence with my coaching material, so that's why I did that. So Okay. there was a time when I felt that okay, now I'm confident. But at the same time, all this exercise has to be done before your study leave. Because if you try to pick this in your study leave, it will consume a lot of time. So what I wanted to just tell everyone that make sure that before you go on with your study leave, just you've just analyzed yourself that what are your weak subjects, what are your strong subjects, and for the weaker subjects, you have put in an effort. Like for SFM, I felt that I'm a bit weak, so I did the past year exam questions. For audit, I felt that okay, I'm not able to cover this subject, and this is huge. So for that, I think I made my own notes. For law, I think I would tell that for law, what I did was along with my classes only. So this is something which this is the learning I took from my intermediate. कि law में ये दिक्कत आती है कि आप retain नहीं कर पाते हो.
तो मैंने क्लासेस के साथ साथ ही एक स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, जो मैंने यूट्यूब वीडियो से देखी थी, अनअकैडमी की एक यूट्यूब वीडियो से देखी थी रादर, जिसमें उन्होंने एडवाइस किया था 1 डे 1 वीक एंड 1 मंथ स्ट्रैटेजी। ओके ओके। तो उसमें क्या होता है कि जो आप आज पढ़ रहे हो आप उसे कल देखो, कल एक बार फिर से याद करो, फिर 1 वीक बाद फिर से याद करो, एंड 1 मंथ के बाद फिर से याद करो। फिर वो याद सो हो मैंने एक जाता है। एक्सेल मेंटेन किया था। हाँ, वो याद हो जाता है। तो मैंने एक एक्सेल मेंटेन किया था, मैं जिस चीज़ का भी आज लेक्चर ले रही हूँ कल मैं उसे रिवाइज कर रही हूँ, देन आफ्टर 1 वीक, देन आफ्टर 1 मंथ। तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हुआ था, बट आई थिंक इट वॉज वर्थ इट। मुझे लॉ बहुत अच्छे से याद हो गया था, मतलब मैं नींद में भी लॉ बोल सकती थी। अरे ऐसा हो गया था। वाह। सो आई थिंक इट बहुत। रियली हेल्प्स अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो, मतलब लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आप एक भी दिन छोड़ नहीं सकते। हाँ, जो श्रुति शुरू से ही तो कहते हुए आ रही है कि कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। भाई या बिना कंसिस्टेंसी के तो कुछ हो ही नहीं सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा श्रुति, हम्म। वन मोर थिंग, आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस। नंबर वन, short term targets, like this is my target for a week, this is my target for the second week. Or option number two, longer targets, this is my target for a month. Which one you prefer? आई थिंक सर पहले लॉन्ग टर्म टारगेट्स बना के उसमें शॉर्ट टर्म प्लान करना, I'll मतलब do दोनों ही opposite. इंपॉर्टेंट है। when I was studying now, so what happened, and this was very usual for me, कि मैं ये सोचता था कि एक महीने में ये सब कुछ करूंगा, और जब वो नहीं होता था ना, तो अंदर से आई फील डीमोटिवेटेड कि अरे क्या हो रहा है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू प्रिपेयर लाइक शॉर्ट टर्म टारगेट्स, इस हफ्ते ये खत्म करना है। डजंट मैटर कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स यू आर टेकिंग, मतलब बिकॉज इट इज मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि हाउ मच आवर्स यू आर गिविंग टू योर स्टडीज। भाई ये कैसे हो सकता है? इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, माय पोजीशन वाज और माय सिचुएशन वाज कि आई यूज्ड टू डू प्लान बेस्ड स्टडीज, लाइक टारगेट बेस्ड स्टडीज। या मेरे को ये कंप्लीट करना है, मेरे को ये कंप्लीट करना है, भाई चाहे 2 घंटे में हो जाए या 15 घंटे में हो, करना है तो करना है। या आई थिंक फॉलो द सेम दिस इज अप्रोच। ओनली द वायबल अप्रोच। हाँ सर, यस। मैंने भी यही अप्रोच फॉलो की थी, क्योंकि आप टाइम बेस्ड स्टडी तो कर ही नहीं सकते सीए फाइनल्स में। सीए फाइनल्स आपको में नहीं हमेशा कर टॉपिक सकते। बेस्ड स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, आपको टारगेट बेस्ड स्टडी, टॉपिक बेस्ड स्टडी करना पड़ेगा। तो इन आप कैसे गिन सकते हो कि मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ? इफेक्टिवली तो आप बैठ के 6 घंटे नहीं पढ़ सकते। इफेक्टिवली एग्जैक्टली आप नहीं पढ़ सकते 6 घंटे भी। हमें तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एग्जैक्टली। ये होता है। अच्छा, हाउ डिड यू मैनेज द सोशल मीडिया? बहुत बड़ा, बड़े लंबे लंबे वादे होते हैं इस पे, मैं आपको बता दूं। मैंने बंद कर दिया था सब कुछ, 1 साल से भाई साहब फोन नहीं खोल के देखा। ऐसा असली में होता है क्या? नहीं सर, ऐसा होता नहीं है, बट पर्सनली मैं इतनी नहीं हूँ एक्टिव सोशल मीडिया पे, मतलब मेरा इतना इंक्लिनेशन नहीं है। मैं बहुत रेयरली यूज करती हूँ, बट वैसे भी अगर आप पूरे दिन में लाइक अराउंड 15-20 मिनट स्पेंड कर रहे हो तो वो नॉर्मल है, मतलब अगर अब आपको रिजुवेनेट होने में हेल्प कर रहा है सो दैट इज फाइन। बट अगर आप बहुत ज्यादा आवर स्पेंड कर रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू ट्रैक योर टाइम, so then that's not good because You so should what know happened when was to that stop, बेसिकली। yeah, you should आप know when to सोशल stop मीडिया में इफ यू exactly। स्टार्ट एंड वो 1 घंटा कब निकल जाता है आपको पता नहीं चलता। यूज Yeah, करो। so personally what I did was कि मैंने स्टडी शुरू होने से 3-4 महीने पहले ही एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था, ताकि मेरे को बाद में मतलब एक वो होता है ना, कि यू फील कि ठीक है आज एक बार ऑन करके देख लेते हैं या कुछ, तो वो चीज़ मैंने पहले ही कम करनी शुरू कर दी थी, सो दैट आई एम नॉट डेविएटेड। बट ये कि कभी ना कभी बीच में यूज कर लेना बस फाइन। आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो कि आप थोड़ा अपडेटेड रहो कि क्या हो रहा है, मतलब यू हैव टू टेक सोशल मीडिया पॉजिटिवली। मैं सोशल मीडिया अपडेटेड रहने के लिए यूज करती हूँ, कि ताकि मुझे रीसेंट न्यूज पता चले, व्हाट इज गोइंग ऑन इन माई इंडस्ट्री, इसके लिए पता चले, ना कि फॉर जस्ट वाइलिंग अवे माई टाइम और समथिंग। सो आपको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करना चाहिए। इवन मैं बच्चों को बताना भूल गया, बातों बातों में हम लोग इतना ज्यादा आगे निकल गए। अरे श्रुति, अपनी सबको ऑल इंडिया रैंक तो बताओ भाई। So I got an all India rank 13. सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 13। बच्चों, बहुत लोगों का सबका सपना होता है कि सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक लाएं, लेकिन ला तभी सकते हो जब बहुत ग्रुप दो भाई। तो सपना तो मेरा भी था, लेकिन मैंने सिंगल सिंगल ग्रुप करके दिया था। तो ओके, एंड इंटरमीडिएट आल्सो यू गॉट अ रैंक? Yes, sir. I got an AIR 23. 23। 23 इंटरमीडिएट में थी, 10 रैंक और कम करके 13 लेके आई। ये होती है इंप्रूवमेंट।
देख रहे हो आप कितना, वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। ओके, लास्ट चीज की बात करते हैं। 3 एडवाइस आर्टिकलशिप से फाइनल की स्टडी के अंदर, आर्टिकलशिप से फाइनल की जर्नी के अंदर 3 एडवाइस देनी है, ना ज्यादा ना कम, 3। ठीक है सर। स्टार्ट। ओके, एंड यू so हैव I 3 think मिनट्स। first of all, okay, okay, so 1 minute for each, right? कूल। Okay, We can do so I setup think as well. okay, okay. So I think first of all, though, I think this is something I've already said, and I would like to emphasize on it again, that take your articleship period very seriously. Don't just think that okay, in articleship we'll just do articleship, or maybe we'll just take classes blindly. You need to be thorough with this thing, that you have to complete your classes before your study leave. You need to completing the classes doesn't mean that just watching the lectures. It means you should have a greater understanding of all the topics. You should be thorough with all the topics, that whatever is contained in your study material or something, you should have read it once and have understood it once, even if you're not learning it, but still should have understood it. Second is second advice what I would like to say is, just focus on study material. So what I did was, before my study leave started, I had once read the study material of all the subjects. So people generally do that when their study leave starts, then they order the study material. So don't do that. Just order it beforehand. Just look at it, do the questions, cover all the things, because you can do a detailed reading before your study leave. During your study leave, you can just only reminisce what you've already done. So it's very important कि आप स्टडी लीव शुरू होने से पहले ही एक बार अपना पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ लो। तो मैंने ये चीज़ कर ली थी कि मैंने पूरा स्टडी मटेरियल देख लिया था आईसीआई का, और साथ साथ उसकी मैपिंग भी कर ली थी अपनी मेन बुक्स में, कि मुझे कौन सी बुक रेफर करनी है, और अगर मान लो इस बुक में ये टॉपिक नहीं है तो मुझे स्टडी मटेरियल का ये वाला पेज रेफर करना है इसके लिए. सो आई हैव मेड माई बुक कॉम्प्रीहेंसिव. द मटेरियल विच आई बी रेफरिंग टू, आई हैव मेड इट कॉम्प्रीहेंसिव. एंड तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि ऐसा बहुत बार होता है कि लाइक इफ यू आर रेफरिंग अ पर्टिकुलर बुक, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है जो स्टडी मटेरियल में है, सो जस्ट मेक श्योर कि आप उसे कवर कर रहे हो, क्योंकि स्टडी मटेरियल से बहुत चीज़ें आती हैं. यू कैन एक्सपेक्ट कि ऑलमोस्ट 60% पेपर आपका स्टडी मटेरियल से ही आएगा, either from the content or from the questions. So it's very important that you make study material your Bible, your Gita, your everything. Exactly, I Your ICS study material. completely agree with you, completely agree. और Yeah. तीसरी चीज मैं जोड़ देता हूँ बच्चों, अपने खुद के बनाए हुए नोट्स और कंसिस्टेंसी, ये 2 Yeah. चीजें आपको करनी पड़ेगी सीए बनने में. तो श्रुति, इट वाज वेरी फंटास्टिक, मजा आ गया मेरे को आपसे बात करके. 2 सीएस जब आपस में बात करते हैं ना, तो वो, अगर मैं इस सेशन को 1 घंटा और चलाऊंगा तो हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे 1 घंटा और भी. Exactly, sir. I think it was wonderful talking to you. It was a great session. Thank you for having me. थैंक यू श्रुति. बाय बाय, टाटा. Bye, बच्चों, sir. Thank श्रुति you. अग्रवाल ऑल इंडिया रैंक 13 हमारे साथ थी. और नमस्ते मैडम, बाय बाय, टाटा. Sure, sir. Thank you. Bye.